ఎదిగిన కొడుకు విదేశాల్లో విద్య. విదేశాల్లో ఉద్యోగంలో స్థిరపడి తల్లిదండ్రులను గాలికి వదిలేసిన సుపుత్రుడు. భర్తను కోల్పోయి ఒంటరైన టీచర్ తల్లి. విశాఖ పారిశ్రామిక ప్రాంతం శ్రీహరిపురంలో ప్రేమ, అనుబంధం, ఆప్యాయతలకు తలవంపులు. ఇక వివరాల్లోకి వెళితే, నవమాసాలు మోసి కని పెంచి పోషించి పెద్దవాడిగా, విద్యావంతుడిగా, ప్రయోజకుడిగా చేసిన కొడుకు విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యా ఉద్యోగంలో స్థిరపడి బంధాలను, అనుబంధాలను పేగు తెంచుకుని పుట్టిన కొడుకు అనుబంధాన్ని మరిచిపోవడంతో, భర్త మరణించడంతో ఒంటరిగా మిగిలి వృద్ధాప్యంలో పుట్టెడు దుఃఖంతో రోజున ఇంటికి వస్తూ ఒంటరిగా మిగిలి దిక్కులు చూస్తున్న సుజాత డే టీచర్. విశాఖపట్నం శ్రీహరిపురంలో విద్యార్థులకు పాఠాలు చెబుతూ కాటికి కాళ్ళు చాచి చావుకి ఎదురు చూస్తుంది. ఇలాంటి వృద్ధురాలు వద్ద స్వర్ణభూమి రియల్ ఎస్టేట్ ప్రతినిధులు ఇంటి స్థలం మీకు ఎంతో అవసరమని లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసి ఇవ్వకుండా మోసం చేశారని వాపోతుంది. కేంద్రీయ విద్యాలయాలలో పనిచేసే రిటైర్ అయిన సుజాత డే విశాఖ స్టీల్ ఇండియా లిమిటెడ్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్న అసీంతో రంజన్ డేతో 1982లో పెళ్ళయింది. పుట్టిన ఒక కొడుకు పిహెచ్డి, ఎంఏ, ఎంఎస్సి తదితర ఉన్నత చదువులు చదివించారు. విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యకు వెళ్తానని వెళ్లిపోయి పెళ్లి చేసుకుని స్థిరపడిన సదరు సుపుత్రుడు ఒక్కసారి కూడా తల్లిదండ్రుల యోగక్షేమాలకు ఫోన్ చేయకపోవడం రెక్కలు వచ్చి ఎగిరిపోయిన పక్షి వలె జరిగిందని 2021 నవంబర్లో భర్త మరణించడంతో ఒంటరి అయ్యానని తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో పేగు తెంచుకు పుట్టలేదు, కానీ నౌకాదళంలో డీజీఎంపీలో పనిచేస్తున్న గౌరవ్ అనాథగా మిగిలిన సుజాత డేను తన తల్లిగా ఆరాధిస్తూ ఆలన పాలన చూసుకుంటున్నాడు. ఇదే విషయాన్ని కన్న కొడుకుతో మోసపోయిన సుజాత డై తన కొడుకుగా భావించి ఇద్దరి మధ్యన గాఢమైన ప్రేమానుబంధాలు పెనువేసుకున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో ఆమె మాట్లాడుతూ గౌరవ్ను తన కొడుకుగానే భావిస్తున్నానని తన కొడుకుగానే ప్రకటిస్తోంది. ఈ వృద్ధాప్యంలో నడవలేని, ఓపిక లేని నా శరీరానికి సేవలందించేందుకే గౌరవ్ ఉన్నాడా అనిపిస్తుంది అంటూ ఆమె వెల్లడించారు. I am from Calcutta, but I am staying here 40 years. Now I am staying in ex-serviceman colony, Sriharipura. So 40 years I did tuition class. So my students are in ISRO also. And so many students are IT sector and BTech and MTech also. And I did tuition very nicely, and I am childless. And I lost my husband 3 years back. Now I am alone. So I am overaged, so I stopped my tuition. Now I have no income. So I am getting government pension. That is my income. Or my husband's family pension is there, but MRO office not release that money. And that's why I'm staying here. Otherwise, I have house in West Bengal. I cannot go because my bank work is not like half. Remaining work is there. And that's why I'm staying here. 6,000 I am giving
rent. Though I have no income, so it is very painful and very tough for me to maintain that one. And I sold my jewelries for giving my rent and my because I am overrated, no. So I fall sick every now and then. So now also just last week I went to St. Hospital, Dr. Datta's under. I am the patient of Dr. Datta's under, and I am having blood clotted. Blood circulation is not going, not having in my left leg. So left leg is a problem. I cannot walk properly. And this fellow, this is my like son, my son. He is a God of Sharma. He is an army engineer, and he every now and then, whenever I ask him to help me, he always stands right. He's a very nice person. He's God-gifted child. That's why, and also I can say another Prasad Garu. Prasad is my ex-serviceman colony's society's president, and also shipyard contractor. He is like my younger brother. My husband's death certificate, my the pension, government pension, also my ration, all Prasad Garu, everything. And for me, whatever I am in problem, and day before yesterday he called also a collector for me. We called collector also. He is so nice person. तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? अभी मेरा प्रॉब्लम जो मेरे पास पानी नहीं है। आपके पास क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास प्रॉब्लम है जो मुझे अभी हमारा ऑफिस था। I purchased one land. That time I have income. मतलब that time I have lots of money. I thought, okay, I will give the remaining 2 lakhs. But after that, I fell sick. And also I tell to CEO, that is Suvarna land, Suvarna land. So CEO is not giving me money. 1 lakh I paid, but I want that money because I cannot continue this year. I am now 70 years. So I want to go to my hometown, and I want that money, but I said you get so many customers, but they are not giving this. Can you give me the full details of the Savarna Bhumi CEO? Govind. And also this marketing manager, Shankar Rao. Marketing. What they are talking about that? They are talking, you paid remaining money. You have to pay. I have to pay last November. Whether they are registered the land on your name? No. Only I gave advance money 1,300,000. But now they are not returning the money. Not returning the money. This money I need to pay, but I have no money. So you are facing the same that problem only. This one and also this MRO office. Then MRO office and then doing Prasad Garu. He is also doing for me this MRO office. No, actually, from media side, we are asking, can you give the full details of that CEO and Savarna Bhumi? Actually, lands money. I want that money. If you have to give details, then only we can do anything. सुवर्ण भूमि ये बता इसलिए मैंने बोला था जब किसने का सुवर्ण भूमि के बारे में थोड़ा बोल दीजिए। सुवर्ण भूमि के बारे में बोलना क्या, जब मैं गया था when I went to see that land, nice land, that is sandalwood land, but it is very far. Where is the area? What is the area? That is Anakapalli, again crossing Anakapalli so far. कुछ जगह देखा? हाँ देखा but they force me to take so many people are taking, but they are local people. Ma'am, are you have any
Slip regarding हाँ, हाँ, हाँ। 1,03,000. Are you have the slip now with you? हाँ फोन में है। उसके बारे में पैसा जमा किया ना, उसका पर्चे है ना आपके पास? हाँ वो फोन में है। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम गुरुदेव है तो जोर और मैं इंडियन आर्मी से हूँ। हमें ट्रेनिंग के दौरान और हमारी जो देश की जो सेना है उसके लिए हमेशा एक चीज सिखाई जाती है कि जब आप कसम खा के अपनी जान लुटाने के लिए बॉर्डर पे जा सकते हो अपने देश के लिए, तो आपके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है या किसी की मदद के लिए अगर आपने किसी को वादा किया है, प्रॉमिस किया है, तो आपकी जुबान और आपकी वर्दी की एक जो विश्वास है, उस विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। तो जो इंडियन आर्मी ने हमें सिखाया है इस तरह, उसी सीख को आज मैं शायद अपने परिवार का कंफर्ट छोड़ के, उसका सेक्रीफाइस करके अम्मा की हेल्प करने के लिए। अम्मा से आपका परिचय क्या है बताइए। मैं जहाँ पे पहले बाहर पे रहता था, श्रीहरिपुरम में जहाँ पे मैं रहता था, तो उसी लेन में ये अम्मा रहते हैं। तो मैं बच्चों को और बूढ़ों को टॉफी चॉकलेट वगैरह दे के, मतलब कोई गरीब No, है not like तो that. मतलब हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। 1 minute, 1 minute. One day I was crying and I tell to my sister-in-law that no one is there who will take me to the hospital. I am very sick. That time he was passing. He said, "Amma, how are you?" I said, "I am not feeling well." So then he came. Then I said, "No one is there to take me to the hospital. I am there. I am your son." After that, he is free. अगर इन अम्मा की जगह मैं अपनी माँ को देखता हूँ कि अगर वो ऐसी परेशानी में होती तो मैं अभी सर्विस की वजह से यहाँ पे हूँ, लेकिन अगर इन्होंने मेरे को बेटा बोला है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। और जब आपने किसी को वादा किया है, कोई प्रॉमिस किया है, तो आपको वो पूरा करना चाहिए जहाँ तक आपसे हो सके। इसीलिए मुझे आप लोगों की हेल्प की इसीलिए जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर मेरा भी एक लिमिटेशंस है और मैं अपने परिवार को भी धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अपने परिवार के खिलाफ जाके भी अम्मा को सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने परिवार को भी अश्योर करना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहा हूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ। और ये अम्मा ने, जब मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हुआ बीच में, तो मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। अम्मा ने मेरे को 15,000 रुपीज दिया। आजकल किसी को बिना जाने पहचाने आदमी 10 रुपए या 100 रुपए देने में 10 बार सोचता है। ये अम्मा ने अगर मेरे को भरोसा करके 15,000 रुपीज दे के और मेरे परिवार से मिलाने में मेरी मदद की है, और मेरे एक सर जिन्होंने मुझे अपने परिवार से मिलाने में मदद की है, तो उनका थैंक यू मैं सिर्फ इसी तरीके से करना चाहता हूँ कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये अम्मा को यहाँ पे रहते हुए 40 साल हो गए हैं, और पिछले 6 साल से ये बताती है जैसे कि ये घर नहीं जा पाई। तो मैंने एक नॉर्मल आदमी की तरह से क्वेश्चन पूछा कि अम्मा, आप इतने सालों से यहाँ पे हो, इतना प्रॉब्लम में हो, तो आपके गांव क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पे आपको 4 लोग जानने वाले होंगे, तो आप वहाँ पे ज्यादा सेफ भी रहोगे, कोई परेशानी होने से आपको मदद भी मिल सकती है। यहाँ पे अगर अभी मैं 5-6 महीने या साल 2 साल के बाद में चला जाऊँ तो अम्मा को कौन देखेगा? क्योंकि हर एक के मन में मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है। तो अम्मा ने बताया कि इनका एक MRO ऑफिस का काम है, उसके लिए भी जितना हो सका हमने अपनी तरफ से मेहनत की, और शायद वो अभी है, मतलब पेंशन का हो गया ना, पेंशन का इनका हो गया है। सिर्फ एक MRO का काम बचा है और एक ये प्लॉट वाला जो है। तो अगर छोटा मोटा हेल्प होता सर, मेरे परिवार पे इस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि किसी 1 या 2 महीने पहले किसी को हेल्प करने के लिए मैं अपने परिवार में भी जो खर्चा जो है वो पूरा नहीं दे पाया था। इस वजह से मेरे परिवार में भी थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई। बट मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ कि आपकी जुबान की वैल्यू तभी होती है जब आप अपने वादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते। तो इसीलिए अम्मा को मैंने उस टाइम पे हाँ बोला था कि अम्मा, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा के आऊंगा। इसलिए हम आज शाम को आसनसोल अम्मा को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ।
और कोशिश ये रहेगा कि अम्मा की परेशानी वहां से सॉल्व हो जाए और मेरे भी परिवार को राहत मिले। और Only 20-25 days. Again, I return because my work is there, no? The land and all. वापस आएगा? हाँ. हाँ। कितना 27 को. हाँ। मैं सिर्फ अम्मा प्लानिंग को तो है। छोड़ने के लिए- ओके। मैं सिर्फ अभी अम्मा को प्लानिंग है। छोड़ने के लिए 2 दिन छुट्टी लेके जा रहा हूँ क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो मैं अम्मा को हाँ, अम्मा छोड़ का के- गाँव जाएगा। और मैंने अपने घर में बोला है Because कि अम्मा my को five मैं हेल्प brothers मतलब expired. अम्मा के घर नहीं जाऊंगा। My 5 ठीक है। brothers expired. no one उन्हें is there. उन्हें सिर्फ इतना बोला है, लेकिन अभी भी है अम्मा को बोला है कि हेल्प करूंगा। अभी यहाँ अम्मा के घर में नहीं है हम, इसलिए मैं घर में भी जो प्रॉमिस किया है वो पूरा निभा रहा हूँ। और अम्मा के घर से बाहर अम्मा को घर तक छोड़ने का मैं जिम्मेदारी लिया है, तो मैं अम्मा को घर तक छोड़ के आऊंगा। अम्मा को जो प्रॉमिस किया है वो भी ओके है और अपने परिवार से भी मैं धोखा नहीं कर रहा हूँ।